Yes, sir. Yes, sir. So next topic, that is estimate the product backlog. अभी एस्टिमेट करना है, किसका करना है एस्टिमेट? हमारा चैप्टर नंबर 4, दैट इज वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद द अजाइल टीम, द साइज एंड द शेड्यूल. Today we start the new topic, that is estimate the product backlog. Yesterday we have seen the different roles in the agile methodologies, the agile teams, the different roles and the responsibilities of that particular roles in agile methods. Just a moment. The screen is visible to you? Yes? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So estimate the product backlog. कौन बता सकता है प्रोडक्ट बैकलॉग क्या है? शायद ईशिता, यू कैन have the knowledge of this particular product backlog. Last lecture we have seen the product backlog. उसके पहले लेक्चर को हमने देखा प्रोडक्ट बैकलॉग, एंड वी हैव टू एस्टिमेट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट बैकलॉग. अगर आपका एग्जाम में बैकलॉग होता है तो क्या होता है? बैकलॉग मीन्स व्हाट? धनश्री? फेल हो जाना। हाँ, फेल होता है, फेल होता है मीन्स, फेल होता है मीन्स वो काम आपका बाकी है, आपको वो सब्जेक्ट क्या करना है, वो सब्जेक्ट क्या करना है, वापस से दे के वो पास करना है. एम आई राइट? यस. Yes, sir. हाँ. अभी सेम वे प्रोडक्ट बैकलॉग मीन्स व्हाट? When you adopt a agile methodology to develop a software or to develop a project in a computer, at that time, when you use agile methodology, at that time you deliver the software, you deliver the particular product by delivering the iteration. आप इटरेशन क्या करते हो? डिलीवर करते हो. इटरेशन मीन्स व्हाट? कौन बताएगा? बोलते जाइए आप, हाँ, मैं अकेला बोलूँगा नहीं. अगर आपको पता है तो बोलिए पता है, नहीं पता है तो बोलिए नहीं पता है. मैंने बार बार समझाया वो इटरेशन क्या होता है क्या नहीं. हम अजाइल मेथोडोलॉजी में क्या करते हैं? इटरेशन से डेवलपमेंट करते हैं. इटरेशन मीन्स व्हाट? छोटा छोटे पुर्जों में वो प्रोडक्ट है, वो सॉफ्टवेयर है, वो डेवलप करना है. ओके, राइट? यस. Yes, sir. हाँ, मीन्स व्हाट? सपोज बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसको क्या करना है? डिवाइड करना है छोटे छोटे स्मॉल मॉड्यूल में. उसको क्या करना है? प्रोडक्ट को, उस प्रोजेक्ट को, उस सॉफ्टवेयर को कस्टमर को डिलीवर करना है. उसे कहेंगे इटरेशन, हम कहेंगे, या उसे स्प्रिंट भी कहते हैं. क्या करते हैं? स्प्रिंट. एस पी आर आई एन टी, दैट इज स्प्रिंट. सो हम जब कुछ पुर्जों में, कुछ छोटे छोटे मॉडल में, या कुछ इटरेशन में या स्प्रिंट में हम जब डेवलप करते हैं प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट, वो सॉफ्टवेयर जो वर्किंग है, हम किसको देते हैं? कस्टमर को देते हैं. ठीक है. बट उसमें कौन से हमारी रिक्वायरमेंट हमने इम्प्लीमेंट की है वो हमें देखना पड़ता है. इफ़ वी नॉट इम्प्लीमेंटेड सम ऑफ द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, then we can say that is a product backlog. That is a product backlog. है क्या? नहीं, रिक्वायरमेंट वन, रिक्वायरमेंट टू, या हम उसे बोलेंगे फीचर वन, फीचर टू, फीचर थ्री. कौन से फीचर हमने उसमें इम्प्लीमेंट किए हैं, सब फीचर हमने इम्प्लीमेंट नहीं किए हैं. बस नेक्स्ट इटरेशन में हम क्या करने वाले हैं? वो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं. तो इसे हम कहेंगे प्रोडक्ट बैकलॉग. अंडरस्टूड? तो हमें क्या करना है? एस्टिमेट करना है. एस्टिमेट द प्रोडक्ट बैकलॉग. Product backlog is nothing but the features which has been not yet implemented in that particular software. That is the requirement of the customer. This particular feature has to be implemented
into the software or into that particular module, but by means of some uh, some changes बोलेंगे, by mistake of some reason that particular requirement, that particular feature has not implemented in the first iteration में हमने उसको implement नहीं किया है, हमसे वो रह चुका है कि नहीं? हम जैसे बोलते हैं कि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का ए बैकलॉग रहा है और नेक्स्ट सेमेस्टर में वो बैकलॉग हम क्या करेंगे, पास करेंगे, है कि नहीं? तो सेम वे, तो फर्स्ट इटरेशन में अगर हमने वो जो हमारा रिक्वायरमेंट है कस्टमर का, वो अगर फुलफिल नहीं हुआ या हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया, जो फीचर कस्टमर को चाहिए थे अगर वो हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो नेक्स्ट इटरेशन में हम जब नेक्स्ट इटरेशन डेवलप करेंगे तो तब वो क्या करेंगे, उस फीचर को इम्प्लीमेंट करेंगे, सॉफ्टवेयर में इंक्लूड करेंगे, उस फंक्शनैलिटी हम इंक्लूड करेंगे, दैट इज द प्रोडक्ट बैकलॉग। अंडरस्टूड? Yes, sir. अभी हम देखेंगे, एस्टिमेट करना है, हमारा टॉपिक क्या है, एस्टिमेट द प्रोडक्ट बैकलॉग। देन अभी ये देखिए, यूजर स्टोरी मीन्स व्हाट इज यूजर स्टोरीज? User stories is nothing but the requirement of the customer। मैं बार बार यही बोलता हूँ आपको, मैंने कम से कम 50 बार ये बोला है, यूजर स्टोरी इज नथिंग बट इट इज द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द कस्टमर, द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, द रिक्वायरमेंट ऑफ द एंड यूजर, दैट इज यूजर स्टोरी। Understood? For example, for to develop this particular user story, we require 24 hours. In user story, there are different tasks. For task 1, it required 2 hours. For task 2, it required 6 hours to develop or to implement in the software. Task 3 require 8 hours. Task 4 require 8 hours. So total 24 hours is required to implement these user stories. Understood? Then another user story, next user story, there are two user stories, means two feature want to implement by the customer in his particular software. So another user stories require the 11 hours, so it have the three different tasks. First task require the 1 hour, second task require the 2 hours, and third task require the 8 hours. So total 11 hours is required. So हम this is the traditional efforts estimation, how many efforts is required to develop this particular user stories or to develop this feature or to implement this feature into that particular software. For example, this is feature a यूज़र स्टोरीज टीम ये फीचर ए में देर आर डिफरेंट यूज़र स्टोरीज, अगर ये फंक्शनैलिटी है फीचर ए में तो उसमें बहुत सारे रिक्वायरमेंट रहेंगी, दैट इज़ यूज़र स्टोरी रहेंगी। सो यूज़र स्टोरी टीम ये डेवलप कर रहा है, यूज़र स्टोरी दूसरी टीम बी डेवलप कर रहा है, यूज़र स्टोरी तीसरी टीम सी डेवलप करना है, और बी का है जो फीचर बी है वो यूज़र स्टोरीज कौन कर रहा है, टीम ये डेवलप कर रहा है। सो दिस वे you can traditionally estimate the how much particular hours is required for estimate the user stories. So what are the different issues and challenges with the traditional efforts of estimation, how many efforts is required if you want to implement that features into that particular software, है क्या नहीं? अगर आपको आप कुछ सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे हैं, अगर आपको कस्टमर ने बोला है कि ये फीचर या ये फंक्शनैलिटी मेरे सॉफ्टवेयर में आप इम्प्लीमेंट करनी है, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, तो पहले आप क्या करोगे, you have to estimate the cost of that particular functionality which is being included, which is being implemented in that particular software. So you have the some method of estimation of that particular features or to estimate that particular user story which you want to implement in the software. All right?
अगर कस्टमर आपको बोलता है मुझे ये फंक्शनलिटी मेरे सॉफ्टवेयर में आप डालिए, तो आप क्या करोगे? उसके लिए कितना एफर्ट्स लगेगा? एफर्ट्स इन द टर्म्स ऑफ मनी, एफर्ट्स इन द टर्म्स ऑफ टाइम, ये कैलकुलेट करोगे पहले। एम आई राइट? Yes, sir. है क्या नाही? Yes, sir. आता तुम्हाला सांगितलं एक, सपोज यू सेड दॅट बिल्ड अ पर्टिक्युलर बिल्ड अ होम. So you are calculating how much square foot areas of home you have to build, how many efforts is required, how much time is required, है क्या नहीं? अगर आप किसी इंजीनियर को बोलते हैं कि मुझे एक छोटा सा घर बनाना है, आपकी रिक्वायरमेंट दोगे, मीन्स व्हाट? आपकी रिक्वायरमेंट मीन्स व्हाट? यूजर स्टोरी रहेगी आपकी। मुझे एक हॉल चाहिए, दो बेडरूम चाहिए, टॉयलेट बाथरूम चाहिए, सामने गार्डन चाहिए। अगर आपने ऐसी रिक्वायरमेंट दी, मीन्स व्हाट? यूजर स्टोरी दिया, तो जो इंजीनियर है आपका, सिविल इंजीनियर है जो घर बनाने वाला है, वो क्या करेगा? ही मे कैलकुलेट द एफर्ट्स टू रिक्वायर to complete that particular home. Understood? So same way, if you want to develop a software, at that time you are calculating how much efforts is required for the each user stories. Understood? You are calculating means what? You are estimating the efforts required to develop that user story. Understood? जैसे आप इंजीनियर को बोला आपने मुझे घर बनाना है, तो आपसे वो रिक्वायरमेंट लेगा और आपको इस्टीमेट देगा, इतना इतना खर्चा आने वाला है, क्योंकि मुझे इतना पैसा मेरा जाने वाला है, इतना इस मजदूर को इतना जाएगा, सीमेंट में इतना जाएगा, स्टील में इतना जाएगा, आपको जो विटें लगानी है उसको उसको इतना जाएगा। अंडरस्टूड? यस। Yes, sir. So this way you estimate. The same way, when a particular end user or a customer gives you the requirement, means user story, that particular want to implement in that particular software, at that time there must be some estimation technique, there must be some method, so you can calculate the efforts required to build that particular user story, efforts required to implement that features or user story in the software. So you can estimate the particular user story by having the different tasks in the user story, and you are calculating how much hours is required to write the code for that particular task. Suppose there is user story 1, this is user story 1, and in this particular user story you have the 4 or 5 tasks. So firstly you are just calculating how much hours is required to finish task 1, how much hours is required to develop task 2, how much hours is required to develop task 3, how much hours is required to task 4. So just you are firstly you are calculating, estimating the in the number of hours. So we have to see what are the issues and challenges with the traditional efforts estimation. अभी जो हमने ट्रेडिशनल एफर्ट्स एस्टिमेशन किया था उसमें इशू और चैलेंजेस क्या है? सो माइक्रो मैनेजमेंट। अभी यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता था? माइक्रो मैनेजमेंट। सो रिलेटेड टू द एस्टिमेशन डेडलाइन विच इज़ गिवन बाय द अदर्स, सो वी हैव द माइक्रो मैनेजमेंट। कितने दिन में कितने समय में वो टास्क कंप्लीट करना है, वो फीचर का इम्प्लीमेंट करना ख़त्म करना है, वी हैव टू डू द माइक्रो मैनेजमेंट. Then other issue, that is other challenges, that is fear of failure. Due to the deadlines of estimation, there is always the pressure and the tension. जैसे कि कुछ कुछ बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसमें उनकी फंक्शनलिटी अलग होती है, बहुत सारा प्रेशर होता है विद इन द डेडलाइन. You have to finish that particular task, you have to implement that particular user story in that particular software. So there is a lots of pressure to uh, develop or build the user story. So when you have the lots of pressure on your mind, that time you have the fear of failure. Understood?
सो उसमें ट्रेडिशन एफर्ट्स ऑफ एस्टिमेशन में हम फेयर ऑफ फेल्यूर का भी हमें डर था. देन पर्सन डिपेंडेंसी डिपेंड ऑन द एक्सपीरियंस एंड स्किल एक्स्ट्रा. Also there is a issue and the challenges. Suppose the person who have the more skill, who have the more experience, then you can confidently say that you would develop that particular user story, or you would implement that user story or the requirement of the customer within the deadline. So this person dependency is there, fear of failure is there, micromanagement is there. There is no buffer, so people always take the higher side for completion of tasks. So there is no buffer. Suppose you have to complete that particular task within 3 days, then employee said, or the particular person who is going to develop that particular functionality or feature, he would say the 3 days will require, and your deadline is 3 days. So there is no buffer. So it may create the pressure on the mind of the developers, on the mind of uh, coders, developers, and testers. So there is a fear of failure of that particular task, or fear of failure of the particular user story which is being implemented in the particular software. So this is lots of issues, or you can say lots of challenges when you are going to efforts required to develop that particular user story, or a requirement by the customer. So there is no buffer, there is person dependency, fear of failure, micromanagement is required. Then how to estimate the backlog? So the product backlog contains the information which is essential to success of every product development process. So इट कंटेन सम ऑफ द इंफॉर्मेशन, जैसे कि कुछ प्रोडक्ट बैकलॉग था, मीन्स कुछ यूजर स्टोरीज थी, वो आपने प्रीवियस इटरेशन में क्या किया, कंप्लीट नहीं किया, और आपको नेक्स्ट इटरेशन में क्या करना है, वो पर्टिकुलर फीचर या यूजर स्टोरीज क्या करना है, डेवलप करना है. सो प्रोडक्ट बैकलॉग कंटेन सम ऑफ द इंफॉर्मेशन विच इज इसेंशियल टू सक्सेस ऑफ एवरी प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस. अगर आपने प्रोडक्ट बैकलॉग अगर कंप्लीट नहीं किया, देन इट इज़ हाईली इम्पॉसिबल टू मूव फॉरवर्ड टू डेवलप द नेक्स्ट यूजर स्टोरीज अकॉर्डिंग टू द कस्टमर. So teams that knows how to estimate the product backlog accurately are the one able to complete the project within the particular set time frames. अभी क्या होता है, जब हम प्रोजेक्ट चालू करते हैं, जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चालू करते हैं, तो हम जब आगे जाते हैं, हम कस्टमर को फर्स्ट इटरेशन या छोटा सा मॉड्यूल, छोटा सा पुर्जा कस्टमर को डिलीवर करते हैं, तो कस्टमर हमें बोलता है, ही गिव्स द फीडबैक दैट पर्टिकुलर फीचर्स is not implemented. I have the user stories, I have um convey this particular user stories to your product owner, but you not yet implemented that particular features or the functionality in the software. At that time, in the next iteration, you have to develop that particular user stories. अगर क्योंकि क्या होता है, विद इन 2 to 4 weeks you have to complete each and every iteration. If you not completed iteration, and if it have some backlog to be implemented in the software, in the project, at that time there is a pressure to complete the project within the time. जो पहला जो फंक्शनैलिटी थी, जो फर्स्ट इटरेशन में आपको जो कंप्लीट करना चाहिए था, वो आपने कंप्लीट नहीं किया, एंड यू आर ट्राई टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी, यू आर ट्राई टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर user story in the next iteration. But in the next iteration there is also schedule of to complete the functionalities, the features of the next iteration. So next iteration में आपको पहला जो पिछला हुआ जो काम होता है वो आपको कंप्लीट करना पड़ता है. So if this condition is there, then you have a lot of pressure to complete the project within the deadline. So by estimating the product backlog, product owner gain the ability to properly prioritize the tasks included in to decide which one are worthwhile. So अगर प्रोडक्ट बैकलॉग अगर रहता है,
तो आप क्या करोगे, यू विल गिव द प्रायोरिटीज टू ईच एंड एवरी प्रोडक्ट बैकलॉग, यू हैव द लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बैकलॉग एंड यू विल गिव द प्रायोरिटीज which product backlog is important from the customer point of view. Then you are try to implement that particular product backlog in the current iteration. Understood? जैसे कि अगर आपके कुछ बैकलॉग रहते हैं, या फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपका सी प्रोग्रामिंग रह गया, देन पीपीएमओ भी रह गया, देन अदर कौन सा आपका कंप्यूटर फंडामेंटल रह गया, देन यू आर ट्राई टू गिव द हायर प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू योर स्टडी। कौन से सब्जेक्ट के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा डिफिकल्ट है, आप ऐसे करते हो ना, या नहीं? यस। यस सर। है क्या नहीं? अगर आपका बैकलॉग रह गया, तीन चार सब्जेक्ट रह गए बैकलॉग, तो आप उसमें प्रायोरिटी देते हो कौन सा हार्ड है ज़्यादा सब्जेक्ट, तो उस सब्जेक्ट को आप ज़्यादा वक्त देते हो, उस सब्जेक्ट ज़्यादा आप क्या करते हो, पढ़ाई करते हो। एम आई राइट? एम आई राइट? Yes, sir. हाँ। तो सेम वे, अगर आपका कुछ पहले इटरेशन में कुछ फंक्शनैलिटी आपने इंस्टॉल नहीं की है, कुछ फंक्शनैलिटी या कुछ प्रोडक्ट बैकलॉग रहा है पिछला वाला, नेक्स्ट इटरेशन में आपको इम्प्लीमेंट करना है, तो इम्प्लीमेंट करने से पहले आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट बैकलॉग इम्पोर्टेंट है, उसके लिए कितना वक्त लगेगा। also you have to give the priority to each and every product backlog. So the product backlog estimation enables the team to make the high level forecast as the proposed story points are plotted into the burn down chart. So when you have the estimation of that particular product backlog, then teams to make the high level forecast as the proposed story points are plotted into the burn down chart. अभी कौन सी यूजर स्टोरी वो बर्न डाउन चार्ट के ऊपर दिखाई दी जाती है, तो आपको यू आर इन अ पोजिशन to know that which particular user story is important and how many days you have to complete that particular user stories. Then product owner can then make the better decision about the product overall scope and the schedule. अभी ये प्रोडक्ट ओनर कौन होता है, आप बताइए मुझे। मैंने बताया है कल परसों भी, प्रतीक्षा, ईशिता, ये कौन होता है प्रोडक्ट ओनर? यस। जो प्रोडक्ट को ओन करता है। हाँ, प्रोडक्ट ओनर। प्रतीक्षा, आरती इज देयर, आरती, माहेश्वरी, हाँ आरती नेम से बताइए, प्रोडक्ट ओनर। आरती, आरती। लीड करता है प्रोजेक्ट को। प्रोडक्ट को लीड करता है प्रोजेक्ट को, वो होता है प्रोडक्ट ओनर। और स्क्रम मास्टर कौन होता है फिर? Product owner is nothing but it is the member of your team. He raised the voice of customer on the behalf of customer, he raised the voice. तो प्रोडक्ट ओनर कौन होता है? वो रिक्वायरमेंट लेता है कस्टमर से और आपके टीम को बताता है, वो आपके टीम का ही हिस्सा होता है, वो टीम मेंबर होता है, दैट इज प्रोडक्ट ओनर। तो प्रोडक्ट ओनर क्या करता है, समझे? प्रोडक्ट ओनर को कौन होता है? जो रिक्वायरमेंट लेता है किससे? कस्टमर से, और वो डेवलपर को समझाता है कस्टमर को ऐसा ऐसा चाहिए, ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट हमें डेवलप करना है, ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर हमें डेवलप करना है, दैट इज प्रोडक्ट ओनर। अंडरस्टूड? यस सर। समझे? यस सर। कस्टमर से क्या करता है?
क्योंकि सारी टीम उसके पास जाएंगे नहीं, कस्टमर के पास। डेवलपर कस्टमर के पास जाएंगे नहीं, तेरी क्या रिक्वायरमेंट है, हमें ऐसा क्या इम्प्लीमेंट करना है, कहीं नहीं कि नहीं। तो प्रोडक्ट ओनर क्या होता है, वो आपके टीम का ही एक मेंबर होता है। वो कस्टमर के पास से रिक्वायरमेंट लेता है, समझ के लेता है, और वो आपको बताता है। दैट इज द प्रोडक्ट ओनर। एंड प्रोडक्ट ओनर सब डिसाइड करता है कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कौन सी फंक्शनलिटी उसमें डालनी है, कौन से नहीं, अकॉर्डिंग टू द व्यू ऑफ कस्टमर। सो he is the member of your team, but on the behalf of customer he may raise his voice. So then product owner can make the better decision about the project overall scope and the schedule. For example, they might reconsider the planning, a must have the feature first one. It has been estimated to require considerable efforts. So product owner decide करता है कौन सा फीचर उसमें पहले डालना है, कौन से बैकलॉग को कितना एफर्ट्स लगने वाला है। देन ही decide which feature has to be implemented first according to the priorities. So one of the key advantages of adopting the agile in the capability of the team is to estimate the work effectually. So in traditional development, earlier when the teams were on waterfall, they used the bottom up approach with the smaller task at the bottom and to determine the cost of each feature. अभी वाटरफॉल मॉडल में क्या करते थे, द स्मॉलेस्ट टास्क, जो छोटी टास्क थी वो एकदम बॉटल में रखते थे, एंड टू डिटरमाइन द कॉस्ट विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ईच फीचर, एंड अकॉर्डिंग टू they can estimate the times and the particular efforts is required to develop that particular software. But in agile we use the two estimation approach, as we are not connected about the details on the task. We estimate the top down estimation and relative sizing estimation. So this way we can estimate the product backlog, that is top down approach. इन फर्स्ट इटरेशन के बाद दूसरा इटरेशन में क्या फंक्शनलिटी डालनी है, सेकंड इटरेशन के बाद तीसरे इटरेशन में क्या फंक्शनलिटी डालनी है। दैट इज द टॉप डाउन अप्रोच। देन व्हेन एस्टिमेटिंग द टास्क, teams go for story points rather than the hours. So when you have to estimate the product backlog, so you go for the story points. So story points is nothing but the particulars. 8 hours means one story points. So you are calculating how much story points is required to complete that particular uh, product backlog. So story points offer the relative values for the level of efforts required to complete the product backlog items in the terms of following factor: the amount of work that need to be completed, how much amount is required to complete, the risk and the uncertainty brought by that particular item, and the complexity of that particular task. So this way you can estimate the product backlog. So by using the user's story point, team member don't enjoy the false sense of certainty of the hourly estimates. You can just concentrate on how much story points is required to complete that particular task. They can see the that one item may require the double the efforts of the another items. Using the relative values of the create the type of interval system of estimation in a smart move. When the team complete a few sprint predicting the number of story point it's able to deliver in a iterative will be easier, and that will make a sprint planning much more accurate. So आप क्या करते हो, फर्स्ट इटरेशन में हमें कितना प्रोडक्ट बैकलॉग ख़त्म करना है, उसको कितने स्टोरी पॉइंट लगने वाले हैं, उस हिसाब से सेकंड इसमें कितना ख़त्म करना है। यू आर कैलकुलेटिंग, यू आर एस्टिमेटिंग, एंड अकॉर्डिंग टू दिस you are have the planning of the how much in how many iteration you are going to complete that particular project or a software. Understood? So that is very easy to have the sprint planning. स्प्रिंट अभी क्या मैंने अभी बताया था आपको, SPRINT स्प्रिंट। व्हाट इज दैट स्प्रिंट?
अभी बताया था मैंने आपको. You may have the planning of sprint. हम्म, Yes. बोलिए. Yes, what is that particular sprint? स्प्रिंट का मतलब क्या है, क्या होता है वो स्प्रिंट? पॉइंट कैलकुलेट करता है। क्या? पॉइंट कैलकुलेट करता है ही. और स्प्रिंट 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 मतलब व्हाट? टाइम ड्यूरेशन। ड्यूरेशन. और स्प्रिंट मतलब वन इटरेशन. अब इटरेशन मीन्स व्हाट? अब इटरेशन मीन्स क्या? कि छोटा छोटा पुर्जा हम कस्टमर को देते हैं. बड़ा प्रोजेक्ट रहेगा, बड़ी रिक्वायरमेंट रहेंगी, तो हम छोटा छोटा बना के उसको देंगे और उसको बोलेंगे तुम इस्तेमाल करो और मुझे हमें वापस फीडबैक दो इसमें क्या और डालना है क्या नहीं. उस हिसाब से हम छोटा छोटा करके पूरा बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसको बोलेंगे स्प्रिंट. अंडरस्टूड? Yes, sir. अभी एस्टिमेट द प्रोडक्ट बैकलॉग. रीज़न टू एस्टिमेट द प्रोडक्ट बैकलॉग. अभी क्यों हमें प्रोडक्ट बैकलॉग एस्टिमेट करना है, क्या रीज़न हो सकते हैं, क्या लगता है आपको? कस्टमर सेटिस्फाइड ना हो तो। क्या है? क्या? यस. यस. बोलिए अश्विनी. आर यू देयर? अरे बोलिए प्रोडक्ट. व्हाई इज दे व्हाट आर द डिफरेंट रीजन टू एस्टिमेट द प्रोडक्ट बैकलॉग? इसको एस्टिमेट क्यों करना है, कितने समय लगेगा, कितना एफर्ट्स लगेगा प्रोडक्ट बैकलॉग को हमें कंप्लीट करने के लिए, क्या रीज़न होता है? फर्स्ट, it allow a team and its product owner to make the longer team
firm prediction about how much can we deliver and when. हमें ये समझ में आएगा कि हमें क्या डिलीवर करना है और कितने समय में डिलीवर करना है. It aids the product owner in making the priorities of decision, so you can have the decision, make the decision when you have the different product backlog, which item you should expect benefit and the cost of that particular product backlog items. Then, for example, a product backlog item is estimated at 3 story point days, or whatever unit you use. It typically a higher priority than it would be if we were estimated at 100. सो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये स्टोरी पॉइंट को कम समय लगता है, ये प्रोडक्ट बैकलॉग को कम समय लगेगा और वो इम्पोर्टेंट है, तो आप पहले वो इस्टीमेट डेवलप करना चालू कर देंगे. एक रीज़न है, most of us include the product owner to agile project cannot afford to make the decision that why. अभी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट ओनर होते हैं, so they work on the agile project but they don't understand which product backlog is important. If you don't estimate, then it is highly impossible to have the scheduling of the work in the team. अगर आपको पता नहीं कितना समय लगने वाला है, अगर आपने एस्टिमेट नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, आपको पता नहीं कितना समय लगेगा वो ये करने के लिए, डेवलप करने के लिए. सो फॉर दैट रीज़न यू आर गोइंग टू एस्टिमेट. So, a third reason to estimate the items on the product backlog is that team members become more knowledgeable about the items by thinking it enough to estimate it. So, when you have the more estimate the particular product backlog, the most of the person who is working in the your project, they are more knowledgeable about that particular items, that is product backlog, which is being implemented in the software. This means there will be a fewer surprise when the feature is being developed. उस प्रोडक्ट बैकलॉग आप जब एस्टिमेट करते हो तो उसके बारे में आपको क्या करना है, कैसे कोडिंग करना है, आप सब सारी क्या करते हो, इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में चालू होती है. सो दैट मीन्स देर will be a fewer surprise when you are going to develop that particular software, or when you are going to implement that particular product backlog. So today we will stop here. आप जस्ट समझता है क्या क्या चालू है क्या नहीं अपना. आप रोज ये होते जाइए. यस आरती, इशिता, पढ़ाई करनी पड़ेगी बहुत. Yes, sir. Yes, sir. मैंने कितने बार बोला है आपको, प्रोडक्ट ओनर क्या है, स्क्रम मास्टर क्या है, पढ़ो. मैं ग्रुप के ऊपर वो डालता हूँ, क्या नोट्स पढ़ो. वो एक दिन आते हो, 5 दिन गायब होते हो, फिर दूसरे दिन कोई तभी नया आता है, वो 5 दिन गायब हो जाता है. ऐसा मत करो, ठीक है. आरती, इशिता, धनश्री, प्रतीक्षा. Yes, sir. धनश्री समझते का, धनश्री, Yes, sir. धनश्री, धनश्री धस. आवाज येत नाही धनश्रीचा, लेफ्ट हो गई शायद. आर यू देयर धनश्री. चलो प्रतीक्षा. ओके ओके. Yes, sir. पिंग द मैसेज धनश्री, पिंग द मैसेज. ओके. चलो वी विल स्टॉप हियर. एंड कल छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है, संडे को भी छुट्टी है, ठीक है. एंजॉय योर हॉलीडेज. टुडे विल